कौन चला रहा है? Be some economical significance. It is not necessary your invention must be complex or complicated. You can file a patent application of simple thing also. Industrial applicability. Invention is capable of being made of any kind of industry. मीन जिस चीज़ का पेटेंट फाइल करने जा रहे हैं वो किसी न किसी अच्छे पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, हमारे मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए एंड हमारे सिस्टम के रूल्स को फॉलो करनी होनी चाहिए. द इन्वेंशन मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ मोरालिटी एंड द विद फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. So what is the need of the intellectual property and what is the need of the commercialization? पहले हमें बताया जाता था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, but now the time has changed. We have to protect our knowledge first. Then you have to right to distribute your knowledge to the other people. So everybody has a knowledge. We have a Saraswati. But if you want to convert into some tangible forms to commercialization, then you have to think about how to commercialize your products. So what is the basic criteria? You have to manufacture those products. You have patent those products which is the need of the arts, and you have to think about the product commercialization also. ऐसा नहीं है कि आपने पेटेंट फाइल कर दिया एंड इट इज जस्ट फॉर द नेम ऑफ द पेटेंट राइट्स. आपको पेटेंट्स कमर्शलाइजेशन भी होना चाहिए, तभी उसका कुछ बेनिफिट्स मिलेगा. Patents are territorial rights. If you are going to file a patent application in India, then your rights is limited to only to India. If you want to file a patent application outside the India, then you can file a by two way. Either you can file patent application directly to that country, or you can submit with the help of PCT. What is PCT? PCT is a patent cooperation treaty by which you can file a patent application in multiple countries. You have to select that countries in which you are going to file a patent applications. PCT is just a single window system by which you can file a patent in multiple applications. It's just an organization who can forward your application to that country for the further process. But it is not a authority to grant your patent invention. Authority is basically a patent office of that country in which you are going to file a patent application. So it will help you for patent drafting, patent searching, and patent examination report replies. Divided according to the jurisdiction of that country. Like if you are going to file a patent application from Haryana, Punjab, Himachal, then you have to approach patent office Delhi, Southern Chennai, Western Mumbai, and rest of India, Kolkata. It depends upon according to your area and the state of that country in which you are belongs to. How to file a patent application? You can submit patent application by three way. Either you can submit by the online mode. You must have class 2 digital signature for the filing of the patent application, and you can submit by post also, and you can submit by hand also. Exclusion. What thing can be initiated for the patent application? Patent Office Patent Act discuss about the section 3 and section 4. Section 3 and section 4 is basically exclusion. That thing cannot be filed for the patent application is all covered under into the section 3. Section 3A is the frivolous invention and invention contrary to well established national laws, like that machine which gives more than 100 for the patent application. Section 3B, commercial exploitation or primary use of invention which contrary to public order and morality. That thing also cannot be filed for the patent application, like gambling machine, device for house breaking. Such type of things cannot be filed for the patent application. Section 3B, commercial exploitation or primary use of invention which contains serious prejudice to health, human, animal, and to the environment, like terminator gene technology, embryonic stem cells, biological warfare material. So such type of things, such type of research is banned in our country due to this type of things, because the output product we don't know how to protect that rights. So these things cannot be filed for the patent application. This is very important to understand what is the section 3, because this is a very basic concept of the patentability. And as such, according to section 3C, as such theory cannot be filed for the patent application. Like जितने भी न्यूटन्स के फार्मूले होते हैं उनको भी हम पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द रीजन. दिस इज जस्ट एन theoretical things, and theory cannot be filed for the patent application. If you have developed some new invention based on that theory, that invention can be filed for the patent application, but as such theory cannot be filed for the patent application. Formulation of abstract theory, discovery of any living things, discovery of non-living substance occurring in the nature cannot be filed for the patent application. Discovery of natural microorganisms cannot be filed for the patent application. But if you have a genetically modified microorganisms, then you can approach for the patent application. As such, natural microorganisms cannot be filed for the patent application. Section 3D.
this is very important as respects to the pharmaceuticals background. Mere discovery of new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance, means that just because of the new use of the existing substance patent application cannot be granted. आपने कहा कि एक आपके पास डिवाइस है, आपने जस्ट उसका एक न्यू यूज डेवलप कर दिया, बट द इन्वेंशन इज सेम, the process is same, everything is same. Just because of the new use of the existing substance, patent cannot be granted. You have to show some new effect, some new synergistic effect in the invention, then you can approach for the patent application. As such patent cannot be granted. Section 3E, admixture and mirrored admixture. Suppose if you are having a two compounds, compound A which are showing antipyretic activity and compound which show analgesic activity, and you have combined both the compounds A and B. So now A and B are showing antipyretic activity and analgesic activity. So such type of things are not be granted as a patent application because they are doing their own work and their own activity. But if they are showing some synergistic effect, then you can approach for the patent application. Section 3F, mere arrangement or rearrangement and duplication of a device, like a bucket fitted with torch, an umbrella with fan, a clock and radio in this cabinet. Such type of things cannot be filed for the patent application because this is just a rearrangement, and rearrangement as such cannot be filed for the patent application. Section 3H, खेती करने के तरीके को भी हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते. द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एज सच कैनॉट बी फाइल फॉर द patent application, but the instrument used for agriculture and horticulture can be filed for the patent application. Like आपने कोई ऐसी मशीन बनाई जिससे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर करने में थोड़ी हेल्पफुल होती है, या innovative concepts, then you can approach for the patent application, but the process used on the land cannot be filed for the patent application. Similarly, in the case of section 3I, the mechanism, the phenomena used on the human body as such cannot be filed for the patent application, like surgical processes as such cannot be filed for the patent application. Curative processes as such cannot be filed for the patent application, like removal of cancer tumor, removal of dental plaque, surgical processes. But the instrument used for the surgical processes and cancer tumor as such cannot be filed for the patent application. Section 3J, plant and animals in whole or plant. As such, plant and animals cannot be filed for the patent application. But if we can protect plant species varieties through Plant and Variety Act, there is a different act for the protection of intellectual property right. Section 3L, a literary work, dramatic work, musical work, artistic work. आपने कोई पोएम लिखी, आपने कोई कविता लिखी, आपने कोई गाना गाया. This is not a subject matter of the patent application because the invention is not involved. आपने कोई पोएम लिखी तो उसका invention नहीं है, it is just a thoughts and expression, idea of the expression application. For the patent application, your invention must have innovative concepts and inventive steps. In this concept, there is no innovations. आपने कोई म्यूजिक लिखा, आपने कोई आर्टिस्टिक वर्क किया. Section 3M, mental act as such cannot be filed for the patent application, like scheme for learning a language, method for solving a cross puzzle, method for learning a language. These things cannot be filed for the patent application. Section 3A, any manner of method of performing expression information like spoken words, visual display, symbol. ट्रेडिशनल नॉलेज, जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज, लाइक जो भी चीज़ें हमारी आयुर्वेद ऋग्वेद में लिखी हुई हैं, उनको अगर आप दोबारा से रीडेवलप करके कुछ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो वो ग्रांट नहीं होगी, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. एट जो चीज़ पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है, इट इज़ नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ नोवेलिटी. ये सेक्शन 3 जो बेसिकली बेस्ड होता है वो नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है. लाइक जैसे सेक्शन 3 बी आपको बताया, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी को फुलफिल नहीं करता. सेक्शन 3 भी नोवेल्टी के कंसेप्ट को फुलफिल नहीं करता. सेक्शन 4, invention falling within the section 21 of the atomic act are not patentable, like invention related to compound of uranium, thorium, plutonium. These things cannot be filed for the patent application. So in nutshell, few things cannot be filed for the patent application, like atomic energy, traditional knowledge, scientific principle, abstract theory, discovery of natural substance, new form of a known substance, mixture of known compounds, and method of transfusion and method of agriculture cannot be filed for the patent application.
In our country, India, in 2014-15, approximate 42,000 applications filed per year. In now in 2018-19, approximate 50,000 patent application filed. You can see the difference in 2014 for 15 disposal is 14,000 and 2018-19 disposal is 50,000. Where we are lacking basically distribution of application category wise. There are two type of categories: resident and non-resident. Resident means those person who belongs to India, and non-residents which are not from the outside, which are not from the India, and which are from the outside of the India, like multinational companies and foreign resident. Like in our country, approximate 50,000 patent application filed per year, in which 75% patent application filed by the multinational companies. यू कैन से डैट कि 130 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 15 से 20,000 लोग ऐसे हैं जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं. टॉप 10 इंडियन एप्लीकेंट फॉर पेटेंट साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड नंबर 1 इज CSIR, सेल इंस्टीट्यूट, DRDO, फॉलोड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, GSP, क्रॉप, etc. And top 10 academic institution and universities, IIT is at number 1 for the filing maximum patent in our country. Chandigarh University, Shuli University, Amity University, followed by Golgotia University and lovely professional universities. Top 10 foreign resident applicant like Qualcomm, Samsung, Mitsubishi, Toyota, etc. So where we are lacking already discussed with you. In our country, India, approximate 50,000 patent application filed per year, and United States of America 8 lakh, China 10 lakh, 11 lakh, and Japan 3 lakh 44. In 52,000 patent application, 75% patent application filed by the multinational companies, and 15 to 25% filed by the Indians. So now you can see the difference between both the ratios. So application filed by Indian applicant like state-wise, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka has filed maximum patent, and that Delhi, Telangana, Uttar Pradesh, Gujarat, Punjab, West Bengal, Haryana, followed by the Assam has filed 109 patent only. So you can see the difference. This is the copy of the patent application. After the grant, you will get this such type of certificates. This is the website of ipindia.nic.in. This is, you will get all the information related to intellectual property right by clicking on ipindia.gov.in. This portal is for the patent, this portal is for the design registration, this portal is for the trademark, and this is for the GL. Is software is patentable in India, yes or no? As such, software cannot be filed for the patent application because this is the subject matter of the copyright, because all the software are based on the algorithm, and algorithm as such cannot be filed for the patent application because this is the subject matter of the copyright. In USA, these things can be filed for the patent application because as per the USA, this is the subject matter of the patent because this is fulfill the criteria of novelty. Are business method patentable in India, yes or no? Business method as such cannot be filed for the patent application because again the business method is not an invention. Like आप कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई सेल कर रहे हैं, बट द इन्वेंशन इज नॉट इन्वॉल्व. तो एक सामान सेल करना उसमें इन्वेंशन इन्वॉल्व नहीं है. So rules and method for doing a business are not be regarded as invention. So this is the reason these things cannot be filed for the patent application. There are total 30 forms for the patent application. Initially, you have to submit form 1, 2, 3, and form 5. First form first is the application for grant of patent. Form 2 is the provisional and complete specification. Form 3 is the statement undertaking under Section 8. And form 5 is the declaration as to inventorship. So you have to submit 3 forms at the point of the filing of the patent application. What is the fee structure? If you are applying a patent application as a natural person, then you have to submit 1,600 rupees. For my MSM is also only 1,600 rupees. For large entity and institution is 8,000 rupees. This is the structure of the Indian patent document. At the top is the title of the invention, then invention and location of the inventor, then assignee, patent application number is given there, and date of the filing. After that, portion of domestic patent cited available on your patent application, portion of foreign cited documents available on your document.
patent grant number, and date of issues. Means you have to file a patent application 2007 and it is granted in 2011. This is the stages of the patent application. Initially, you have to submit provisional specification and complete specification. After 18 months, your patent will be published at the patent office website automatically. But if you don't want to wait for 18 months, then you can request for the early publication. For early publication, you have to submit the fees, early publication fees. Then your patent will be published within 1 month from the date of the filing, and within 48 months from the date of the filing, you have to submit request for examination. After request for examination, a patent examiner will issue first examination report, that is called FER. After that, you have to reply all the objection raised by the patent office. After replying all the objection and satisfaction by the patent examiner, your patent will be granted. What is the information required for the filing of the patent application? You have to collect all the information related to your invention, like area of the invention, description of the invention, how does it work, advantage of the invention, and all the drawings. Check whether the invention is patentable or not. You have to check the novelty concept, innovativeness concept, industrial applicability concepts. You have to cover all the section 3, understand all the section 3 of the Indian Patent Act. Then you have to draft your patent application. You can also draft your patent application, or you can take the help of the patent agent for the drafting the patent application. Then your patent will be published at the patent office website automatically after the 18 months. But if you don't want to wait for 18 months, you can also request for the early publication. Generally, the patent application is published within 1 month from request from the early publication. Then you have to request for the examination within 48 months from the patent application. After that, first examination report will be submitted by the controller of patent examiner, and it contains prior documents and inventive step questions. You have to respond all the objections raised by the patent examiner. After clearing all the objections, your patent will be granted. So this is about all about the patent rights, the basic concepts of the patent rights. What is the need of the patent? So all this concept is covered under the patent rights. Next one is the trademark. Trademark basically are granted for sign, words, letter, color, combination, representation, shape of goods. We can protect with the help of trademarks. The duration of the trademark is unlimited time, but you have to renew after every 10 years. अगर आप 10 साल के बाद renew नहीं करवाते तो कोई trademark आपकी जगह कोई और भी यूज कर सकता है. जैसे मैंने आपको बताया पेटेंट के राइट्स 20 ईयर्स तक होते हैं, 20 साल के बाद आप उसको रिन्यू नहीं करवा सकते. बट ट्रेडमार्क के राइट्स आपके पास अनलिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, बट यू हैव टू रिन्यू आफ्टर एवरी 10 ईयर. There are 45 classes of trademarks. If you want to file a trademark application for soaps, then you have to submit your application class 3, for medicines class 5, for machine tools class 7, for electronic components class 9, for food items class 30, for all type of trading comes under the class 35, education services class 41, restaurant services class 43, and legal services class 45. There are a lot of caution notice in the market to just aware the public about the trademark, कि कृपया करके हमारा ब्रांड नेम मत इस्तेमाल कीजिए. अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. The caution notice to aware the public about the brand registration, and this is the IPR rights. जब आप मार्केट में जाए आपको पानी की बोतल मिले, आप ले लेंगे दिस टाइप ऑफ बोटल्स. नाउ यू कैन परचेज. मीन्स एक लेबल के लगने से आपके माइंड में एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट होती है कि दिस प्रोडक्ट इज बिलोंग्स टू सम गुड कंपनी. बट इफ द स्पेलिंग इज डिफरेंट, then again is question is the quality of the products. But trademark does not represent the quality of the goods. Trademark कभी भी क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता. इट रिप्रेजेंट ओनली द ब्रांड नेम्स, कि क्या ये ब्रांड नेम सिमिलर है नहीं है, क्या ये ब्रांड नेम ओरिजिनल है कि नहीं है. सो एक अल्फ़ाबेट चेंज होने से एक माइंड में आइडेंटिफिकेशन चेंज होती है, उसकी गुडविल को लेके, उसकी उसकी ब्रांडिंग को लेके, उसकी ट्रस्ट इश्यूज को लेके. सो वी हैव टू थिंक अबाउट व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज ए प्रोडक्ट्स. बिस्लेरी की एक अपनी वैल्यू रेपुटेशन है, एक अपनी आईपी वैल्यू है मार्केट के अंदर. इसकी आईपी ऑडिट्स होती है, इसमें बिलियन डॉलर्स में इसकी आईपी वैल्यू सेल्स होती है. सो एवरी कंट्री हैज देयर ओन आईपी वैल्यू. आइडेंटिफाई द सिंबल. एवरीबडी नोज दैट दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू नाइकी. It took 40 years for promote their brand name. Initially, they are in rectangular shape in blue color, Nike then Mark. After that, in only Nike and Mark, and just on the basis of the mark, now people can identify this product is belongs to Nike. There are 4 types of trademark. If you are going to sell a products, then you can put it into class in trademarks. For services, you have to apply in service mark, like courier services, educational services, restaurant services. These all are the service marks.
Collective marks is applied by the group of association like All India Management Association, All India Council of Technical Education. These all are the collective marks. Certification mark like ISI, ISO, wool marks. These all are the certification marks. Well-known marks like Mercedes, Reliance, Godrej, Tata. These all are the well-known marks. These all are the trademarks which we are using 6 a.m. to 10 p.m. सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये सारे के सारे ब्रांड नेम हम यूज करते हैं फॉर देयर इन आवर डेली लाइफ. Few examples of the counterfeit products. If we can convert Honda into telephone, then it's look like a Honda. But these all are the multinational companies. Both companies are multinational. Both are having their own goodwill in the market and having their own reputation in the market. Sometimes people can use same font color, same color representation and identification. So such type of things are not allowed. Some people use same artistic work of the labels like Colas and Colgate. Sometimes the people use same outer appearance similar like that. Purell and Purewell. Only one spelling is different. Only V is there, EV, and the spelling is changed. So such type of brandings are not there. Sometimes people use shape of the goods like bottle की shape similar use कर लेते हैं OK and Ole. The one spelling is different K and L. The font is also similar. So such type of things are not allowed. This is the case of the Jaipur. They are selling a product by the name of Fruiteen. They are saying that कि इसके अंदर हमने फ्रूट डाला तो इसका नाम हमने फ्रूटीन रखा है. So this is also the example of the counterfeit products. कोर्ट ने इमीडिएट इसको सील किया और इसके अगेंस्ट एक्शन लिया. This is another example. Suppose this is very important to understand specifically. Suppose कीजिए आपने चंडीगढ़ में किसी डॉक्टर से मेडिसिन ली and they are using a brand name Medzol. मेडजोल. सपोज अगर आप कोई मेडिसिन परचेज कर रहे हैं मेडजोल एंड आपने कोई डॉक्टर ने आपको लिखी मेडजोल एंड उसके अंदर मोलिक्यूल है इट्राकोनाजोल. इट्राकोनाजोल इज यूज फॉर एंटी एलर्जिक प्रिपरेशन एंड सम आर रिकमेंडेड इसमाप्रोजोल एंड मेडजोल. आपने किसी और केमिस्ट से ली तो उसने आपको इसमाप्रोजोल दे दी, एल्बेंडाजोल दे दी. सो सम टाइम एक ब्रांड नेम एक गलत रॉन्ग मेडिकेशन से आपकी लाइफ भी जा सकती है. रॉन्ग मेडिकेशन से आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं. So be careful when you are going to purchase a medicine. You must read chemical name of the product. क्योंकि केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए एज ए लेमन बिकॉज समटाइम सेम ब्रांड नेम्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं और उससे आपको हार्म भी हो सकता है. You can protect trade dress protection also with the help of copyright. Outer you can protect outer appearance of the device with the help of copyright trade dress protection. How to select a trademark? It should be easy to spell. It should be easy to pronounce. Like Sony, Tata, Reliance. As such, there is no meaning in the dictionary Sony and Tata, but you have to coin your brand name with the help of Sony and Tata. The you can also coin some few words like Kodak and Dalda. Kodak Dalda, as such, there is no meaning in the dictionary, but you can protect with the help of trademarks. But you can also think about coin words for the trademark filing. Mark should not be according to geographical name. किसी भी जगह के नाम पे, किसी भी लोकेशन के नाम पे, किसी भी गुरु के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे कोई भी ट्रेडमार्क ग्रांट्स नहीं होता. Avoid words which describe the quality of the goods like best, perfect, super quality. Such type of brand names cannot be granted. Trademark registration process. Initially, you have to search your trademark. After that, you have to file your trademark application. Either it is accepted or rejected. It depends on the your brand names. After acceptance, your trademark will be published at the trademark journal for further process. This is the copy of the trademark registration certificate. This is the website of ipindia.nic. You can also check your brand name on the website ipindia.nic. You have to enter your brand name and you have to enter the class in which you are going to file your trademark application. Suppose if you are searching a brand name for, this is the example of the discipline. Suppose if you are searching for the brand name for the medicine, then you have to search in class 5. Now you can see discipline and discipline X, discipline all are belongs to same company. So you have to think when you are going to launch your brand name, you have to check in particularly class in which you are going to launch a product. For hospitals, you have to search in class 44. So this is all about the trademarks. Next one is the industrial design. Industrial designs are granted for ornamental feature, aesthetic feature. कोई चीज बाहर से कैसे दिखाई दे रही है उसके हम आउटर अपीयरेंस को उसके एस्थेटिक फीचर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन. Industrial design only protect the
Non-technical feature. For the technical feature, you have to protect with the help of trademark application. Technical feature you can protect with the help of patent rights, not trademark. For branding, you can protect with the help of the trademarks. What is the criteria of industrial design? Your design must be a new. You can protect shape, configuration, and any outer appearance of the device. These all are the example of the industrial design. You can protect the packaging container also through the industrial design, because there is no technology involved in this device. You can protect outer appearance of this device. These all are the example of the pharmaceutical products, textile and jewelries. जितने भी ज्वेलर्स होते हैं, पीपी ज्वेलर्स, तनिक ज्वेलर्स, सब अपने डिजाइन को प्रोटेक्ट करते हैं. किसी भी कार का डिजाइन सेम नहीं होता बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन. किसी भी प्रेशर कुकर का डिजाइन सेम नहीं होता बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन. दे कैन प्रोटेक्ट द आउटर अपीयरेंस ऑफ द डिवाइस with the help of industrial design. The criteria of design system is the design must be new and must be original. सबको बताइए हाथ और पैर का निशान है, लेकिन मार्केट में इसकी चीज नहीं दिखेगी. यू कैन प्रोटेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन. What is the criteria of design feature? The design must be a new and original. The purpose of the design may be same, but the article in different uh, look, shape, you can protect with the help of industrial design. This also is example of the industrial design. This is a copy of the certificate for the industrial design. सबको पता है इसमें फ्यूल एफिशिएंसी सेम है, इंजन सेम है, बट द आउटर अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट. यू कैन प्रोटेक्ट आउटर अपीयरेंस ऑफ द डिवाइस. These all are the example of the industrial design. This is a case of the Ludhiana in Hero Cycle versus Evan. They are using the same design. बाद में एवन को अपना जो डिज़ाइन है अपनी साइकिल्स को मार्केट से हटाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने हीरो के डिज़ाइन को कॉपी किया था. यू कैन सी बोथ द डिज़ाइंस आर सिमिलर. The duration of the industrial design is 15 years. Initially, you will get a rights for 10 years, but you can renew for 5 years also. Few things cannot be filed for the industrial design, like calendars, map, official symbols, religious symbols, mere mechanical contrivance, building, construction of real estate, workshop alteration, change in size. Such type of things cannot be filed for the industrial designs. In our country, India, approximate 6,700 design application filed per year, in which 90% is granted and 40% is foreign filing. You can protect a single product by multiple type of IPR protection. Like this device, Dyson Airblade is used for the hand sanitizing and hand drying. You have to insert your hand and automatically it will be dried and sanitized. So this technology is protected with the help of patent rights, and the brand name Dyson Airblade is protected through with the help of trademark, and the device of this product is protected through industrial design, and the literature used for this product is protected through copyright. So you can protect your brand product by the multiple type of IPR protection. This is the last right. Copyright. Copyright are granted for musical work, artistic work, dramatic work, and cinematography work, sound recording. You can protect with the help of copyrights. Means if you express your idea in material form, then you can protect with the help of copyright. As such, there is no official procedure for the copyright. The moment you have created the product, create the work, your work is protected as a copyright. But you have to prove you are the first original author of that work. So for that, you can take the help of the government of India also by submitting your document and evidence to government for the copyright certificate. After that, government will issue a certificate that you have submitted first your document to the copyright office. There are two types of rights: moral rights and economic rights. Moral rights to protect the personality of the authors, and economic rights to bring economic benefits from that person. So like जैसे आपने एक बुक लिखने के लिए पब्लिश करने के लिए दी किसी ऑथर्स को, पब्लिशर को, तो एज एन ऑथर आपके पास क्या राइट्स है और पब्लिशर के पास क्या राइट्स है. लाइक आपकी जो बुक है आपने इंग्लिश में लिखी तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है, उसको किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है विद योर परमिशन. बट द थिंग इज दैट कि आपका नाम एज एन ऑथर देना मैंडेटरी है, बट जो ट्रांसलेट करेगा उसका नाम एज एन ट्रांसलेटर देना मैंडेटरी है बिकॉज ऑफ मोरल राइट्स. अगर आप ही ट्रांसलेट करके देते तो आपका नाम भी एज एन ऑथर एंड ट्रांसलेटर दोनों आएगा, बट वो आप अपनी मर्जी से उस बुक्स को सेल नहीं कर सकते. अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द पब्लिशर्स. सो जैसे अभी आपने लॉकडाउन में रामायण और महाभारत देखी, हर एक पर्सन का नाम आता लास्ट में खत्म होने के बाद. मींस व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ भीम, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ अर्जुन.
दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मोरल राइट्स। नैतिक अधिकार है, चाहे वो फिल्म कितने सालों के बाद दोबारा क्रिएट की गई, लेकिन अब उसको दोबारा टेलीकास्ट किया गया तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब जो उसके रॉयल्टी किसे मिलेगी उसको दोबारा दिखाने के लिए प्रोड्यूसर को, द राइट्स बिलोंग्स टू द प्रोड्यूसर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉपीराइट्स, राइट ऑफ ऑथरशिप, राइट ऑफ इंटीग्रिटी, एंड कॉपीराइट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अब जैसे ही कोरोना आया तो आपने देखा कि लोगों में एक अवेयरनेस आ गई कि हमें अपने राइट्स कैसे बचाने हैं, क्योंकि 2020 इज अबाउट द सेफ्टी एंड 2021 इज अबाउट द सिक्योरिटी, कि आपके पास जो सिक्योरिटी कितनी है आपकी, आपके फ़ोन की, आपके डाटा की। तो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सिक्योरिटी। कॉपीराइट को कॉपी करना, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। द मिनिमम फाइन इज 50,000 to 2 lakh rupees and imprisonment is 6 months to 3 years. What is a fair use? Fair use, you can use any type of copyright material without a license for the purposes of research, review, criticism, and education. For these things, you don't have to take permission from the authors. Another one is the geographical indication. Geographical indication basically are granted for natural goods, agriculture goods, and manufactured goods. It protects the geographical rights of that persons. Means जो उस पर्टिकुलर रीजन्स में जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको उसके राइट्स दिए जाते हैं, लाइक बासमती सिल्क, मैसूर बासमती राइस, मैसूर सिल्क, मैसूर सैंडलवुड, मैसूर जैस्मिन, Darjeeling tea. These all are the example of the geographical indication. Trade secret are granted for, trade secret basically is known as also undisclosed information. To protect undisclosed information, that thing cannot be filed for the patent application, like idea, survey, method, manufacturing work process, experiment results, chemical formula. These things can be protected with the help of trade secret. As such, there is a no law in our country to protect the trade secret. You can protect with the help of non-disclosure agreement, or you can protect with the help of like labor law act. So this is all about the protection of the trade secrets. You have to think like Coca-Cola बनाने का फार्मूला, KFC बर्गर का फार्मूला, these things can be protected as a trade secrets. कई कंपनीज ट्रेड सीक्रेट इसलिए प्रोटेक्ट करती हैं कि जैसे पेटेंट के राइट्स है 20 ईयर्स के होते हैं, 20 साल खत्म होने के बाद कोई भी उसे बना सकता है, बेच सकता है। अगर मान लीजिए कोका कोला का फार्मूला पेटेंट के लिए फाइल किया जाता तो 20 साल खत्म होने के बाद सेम फार्मूला उनको पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज करना पड़ता। सो दिस इज द रीजन कि उन्होंने इसको कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट किया कि कोई भी पर्सन उनको, बट ये इसमें ट्रेड सीक्रेट्स में क्या होता है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप उसको कैसे सिक्योर करेंगे, क्योंकि वंस वो पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज हो गई तो कोई भी उसे बना सकता है और बेच सकता है। सो ये आपको इंश्योर होना चाहिए कि आप अपने ट्रेड सीक्रेट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। देयर इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, DL101। ये हर साल फ्री डिप्लोमा कराते हैं फॉर द लर्निंग पीपल्स, जितने भी इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप IPR में नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। DL101, 102, 103 एंड 104 4 डिप्लोमास होते हैं। यू हैव टू क्लिक wipo.int, यू हैव टू क्लिक wipo academy। दिस इज जस्ट ए 1.5 month कोर्स। आपको रजिस्टर करना है, आपका स्टडी मटेरियल आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, आपको एग्जाम भी घर बैठे देना है। अगर आपने 60% क्वेश्चंस के आंसर सही दे दिए तो आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, एंड दैट सर्टिफिकेट इज वैलिड वर्ल्ड वाइड, बिकॉज वो आपको एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने सबमिट किया है। अनदर वन इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत सरकार हर साल 120 वुमेन्स को ट्रेन करती है इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पेटेंट को लिखते कैसे, ड्राफ्ट करते कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देती है। अंडर द स्कीम ऑफ WSC वुमेन साइंटिस्ट स्कीम सी, जिसमें स्कॉलरशिप भी दी जाती है M.Pharm M.Tech स्टूडेंट को ₹30,000 एंड फॉर PhD स्टूडेंट इज ₹40,000। Thank you so much. This is all about intellectual property rights. So if you have any question related to IPR, you are free to ask me, and you can also take help of Patent Information Center, is situated at Haryana State Council for Science and Technology, Panchkula. Thank you so much, sir. I request participants to ask your questions in the chat box so that we can clear our queries. I request Principal Ma'am, if she is there, kindly say a few words to motivate all of us.
Kindly drop your questions in chat box so that we can ask to sir. Nishu ma'am, you can ask some question. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी मैम। जैसे सर हमने पेटेंट लिया, तो जैसे इंडिया में पेटेंट लिया, तो क्या ये इंडिया के लिए वैलिड होगा या पूरे वर्ल्ड के लिए वैलिड होगा? अगर मैम आपने इंडिया में पेटेंट फाइल किया तो आपका जो पेटेंट राइट्स है वो इंडिया तक ही वैलिड रहेंगे। अगर आप इंडिया से बाहर पेटेंट फाइल करना चाहते हैं तो आप दो तरीके से फाइल कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली उस कंट्री की वेबसाइट पर जाके फाइल कर सकते हैं, या आप पीसीटी की हेल्प से फाइल कर सकते हैं। पीसीटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, जो आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करती है। जैसे वो आपकी हेल्प करेगी कि आपके पेटेंट एप्लीकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोई ड्राफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सर्चिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चेक करेंगे। उसके बाद वो एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर कंट्री में फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है वो कंट्री ही है जो डिसाइड करेगी कि आपके पेटेंट ग्रांट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। राइट सर। तो मैं सर कोई ऐसा वर्ड पेटेंट नाम का नहीं है कि एक बार पेटेंट के लिए अप्लाई किया तो ऑल ओवर वर्ल्ड पे यस, वो पेटेंट जो है एप्लीकेबल हो बस? एज सच वर्ल्ड पेटेंट कुछ नहीं होता मैम, हर एक कंट्री में डिसाइड करते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एक लॉ है, हर एक कंट्री का एक अपना सिस्टम है। जैसे इन द केस ऑफ सिविल ऑफेंसेस एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस हर एक कंट्री के अपने अपने अलग है, वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के भी हर एक के अलग है। मतलब बेसिक बेसिक इज सेम, बट कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। लाइक जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर का पेटेंट फाइल नहीं हो सकता, अमेरिका में हो सकता है। तो हर एक कंट्री का बेसिक, जैसे पेटेंट राइट्स हर कंट्री में 20 ईयर्स की है, लेकिन लेकिन हर एक कंट्री के लिए आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी वहाँ पर सबमिट करने के लिए। राइट सर। सर एक बात और है कि जब तक हमने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं किया, उससे पहले ही हमें पेटेंट कराना पड़ेगा, यस, ये लॉन्च करने के बाद में पेटेंट पेटेंट कर? पेटेंट सबसे पहले आपको पेटेंट फाइल करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि हम पहले इसको चेक कर लेंगे मार्केट में कितना सेल होता है या अवेलेबल होता है। पहले हमने अपने प्रोडक्ट को पेटेंट के लिए फाइल करना है, उसके बाद ही हम उसको कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपका पेटेंट ग्रांट नहीं होगा अगर आपने उसको पहले ही ऑलरेडी मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया तो। राइट सर। तो मतलब इसका मतलब चेकिंग वाला प्रोविजन इसमें नहीं है, एंड मोर ओवर जो आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया सर उसमें डिले हो जाएगा, क्योंकि जब तक अगर आपने, या आप पेटेंट को फाइल करके अप्लाई करके प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, या आपको उसका वेट करना पड़ेगा? नहीं, आप जिस दिन से आपने पेटेंट फाइल किया आपके राइट्स उस दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपने फाइल किया उसके बाद आप लॉन्च कर सकते हैं, ग्रांट की आपको वेट नहीं करनी है। इनिशियली फाइलिंग के बाद ही आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पेटेंट सबमिट कर सकते हैं उसके बाद अवेलेबल हो डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले नहीं होना चाहिए। इसलिए पेटेंट ऑफिस जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं आपको डेट, टाइम और इवन की सेकंड भी देते हैं कि इतने बज के इतने मिनट पे इतने सेकंड पे ये डेटा अवेलेबल था, आपने सबमिट किया। राइट सर। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। कोई और पार्टिसिपेंट आईपीआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या? यस मैडम। यस मैम, मैं, आवाज आ रही है मेरी? यस सर प्लीज। यस सर, यस सर। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर M.R. बंसल फ्रॉम भगवान परशुराम कॉलेज कुरुक्षेत्र। जी सर। अभी आपने बताया कि जो कॉपीराइट है वो 20 इयर्स तक जो है पेटेंट राइट्स सर, वैलिड होता है। पेटेंट राइट्स, पेटेंट राइट्स 20 ईयर्स होता है। कॉपीराइट्स क्या होता है? लाइफ टाइम। कॉपीराइट्स होता है लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर, मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी 60 साल के लिए उसके राइट्स मिलेंगे कॉपीराइट्स के। मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी, पूरी लाइफ टाइम तो आपको उसके राइट्स मिलेंगे, प्लस आपके आपकी डेथ के बाद 60 ईयर्स के लिए राइट्स भी आपकी नेक्स्ट जनरेशन को दे दिए जाएंगे। नहीं सर, जो पेटेंट राइट की बात कर रहे थे आप, वो क्या ट्रेडमार्क पे भी लागू होता है? नहीं सर, पेटेंट होता है टेक्नोलॉजी का, ट्रेडमार्क होता है ब्रांड का, साइंस का, वर्ड्स का। लाइक जैसे मान लीजिए आप मार्केट से मोबाइल फोन परचेज करते हैं, मोबाइल फोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको पेटेंट राइट्स है। मोबाइल फोन किस कंपनी का आपने लिया, लाइक सैमसंग, नोकिया एंड एक्सेट्रा, वो ब्रांड नेम ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट होता है। उस फोन का जो डिवाइस है, शेप है उसकी, मतलब कैमरे की पोजीशन कहाँ है, सेंसर की पोजीशन कहाँ है, वो सब इंडस्ट्री डिजाइन के थ्रू प्रोटेक्ट होती है। और उसका जो लिटरेरी वर्क है, कैटलॉग है, उसकी जो डिजाइनिंग है, उसको हम कॉपीराइट थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मीन्स हर एक का सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है।
हम आपस अलग में अलग। मिक्सअप नहीं कर सकते उसको कि हम कहें कि हमारे नाम का पेटेंट हो जाए। नाम का कभी भी पेटेंट नहीं होता, नाम हमेशा ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक तो else want to ask question, they can ask. Sir, I also want to ask one question. जैसा कि आपने बताया कि वी कैन नॉट पेटेंट, मीन्स क्या हम आइडिया को भी पेटेंट कर सकते हैं सर बिफोर? सर जैसे कई बार हम कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं, कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज आपने बोला कि हम उसको पेटेंट नहीं कर सकते हैं, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं देन वी कैन पेटेंट दैट थिंग। Yes. लेकिन कई बार हम कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं, उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को ही बताया होता है और सेम समटाइम्स सेम वर्डिंग होती है, सेम सब कुछ होता है, सेम एवरीथिंग दे हैव यूज्ड सेम, और वो दूसरे चैनल पे भी मिल जाता है। तो क्या ये भी कॉपीराइट के अगेंस्ट, मतलब वी कैन डू Yes. समथिंग अबाउट दिस आल्सो? दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है कि आपने सपोज कीजिए आप 2-3 पर्सन एक जगह खड़े हैं और आपने किसी की फोटोग्राफ क्लिक की, और वो फोटोग्राफ्स कभी भी सेम नहीं आएगी, वो अलग अलग फोटो आएगी, वो हर एक फोटो का अलग एक पोजीशन होती है, और वो पर्टिकुलर पोजीशन आपके कॉपीराइट्स है। सिमिलरली मान लीजिए जैसे आप एक सपोज कीजिए एक सॉन्ग है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो राष्ट्रीय गीत 4 लोग गाते हैं और 4 लोग अलग अलग तरीके से उसको गा रहे हैं, उसका म्यूजिक अलग है, उसकी कंपोजिशन अलग है, उसको उसका वे ऑफ स्पीकिंग अलग है, तो वो हर एक का अपना कॉपीराइट है। लेकिन किसी को भी राष्ट्रीय गीत को कॉपीराइट नहीं मिल सकते, तो इसलिए द रीजन इज दिस कि जो, लेकिन मान लीजिए जैसे उसकी वीडियो है, वो वीडियो कोई अपने यूट्यूब चैनल पे प्ले नहीं कर सकता क्योंकि वो राइट्स उसके हैं। आप उसको रिपीट, आप वो रेसिपी आप देख के भी बोल सकते हैं, आप भी उसको यूज कर सकते हैं, उस रेसिपी को सेम अपने वे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कभी भी मोनोपोली राइट्स नहीं मिलते। Right, sir. Okay. Thank you so much, sir, for this. Anyone else, if you want to ask question, you can ask. Sir, one more question is there. आपने डिजाइन पेटेंट के बारे में बताया that we can patent our design also. तो सर जो डिजाइन होता है, क्या वो प्रोडक्ट से पहले पेटेंट करवाना होगा उसका, या उसको बाद में भी करवा सकते हैं? और सपोज हमें बाद में कोई मॉडिफिकेशन yes, करनी है उसी डिजाइन में, बाद में भी करवा सकते हैं, बट उसको पहले डिजाइन को हमेशा पहले फाइल करना चाहिए। आपको डिजाइन न्यू होना चाहिए, नोवल होना चाहिए, और पहले आप उसको डिजाइन के लिए फाइल करें। डिजाइन लेना बहुत आसान है इंडिया में, आपको जस्ट फोटोग्राफ सबमिट करनी है फ्रॉम 360 डिग्री एंगल ऑफ द डिवाइस, तो उसके बाद आपको डिजाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 5 to 6 मंथ आपको इशू हो जाता है। और सर सपोज उस डिजाइन में कोई मॉडिफिकेशन करनी है आपको, देन आपको अगेन आपको उसको डिजाइन फाइल करनी है। ओके सर, वन मोर थिंग, आई वाज रीडिंग अ बुक इन द मॉर्निंग, और उसके कॉपीराइट्स आई वाज रीडिंग कि कॉपी राइट्स क्या होते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि फोटोकॉपी इज नॉट अलाउड ऑफ दिस बुक। वाइल इन द लास्ट सेमिनार आपने बोला कि फोटोकॉपी करके आप पढ़ सकते हैं, बट यू कैन नॉट सेल दैट। आपके ऊपर, आप फोटोकॉपी करके पढ़ सकते हैं खुद के लिए, पर्सनल यूज के लिए, बट आप उसको बेच नहीं सकते। लेकिन उस बुक में लिखा हुआ था कॉपीराइट्स में ही नीचे एक लाइन कि आप इसको फोटोकॉपी भी नहीं कर सकते। सो कौन सी ईयर की बुक थी मैम वो आप मुझे बुक के नेम डिटेल्स भेज देना, बिकॉज लेटेस्ट जजमेंट बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, आप कोई भी टीचर, कोई भी रिसर्च स्कॉलर किसी भी बुक को पढ़ सकता है फॉर द टीचिंग पर्पसेस, देयर इज नो क्राइम। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। एनीवन एल्स, इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन you can ask, or if you want to say something you can unmute yourself. आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस टू सर। Nishu ma'am, shall we proceed towards the end of the seminar? हाँ जी, yes Anuradha ma'am, we can. Okay. Thank you so much, sir. I deem it a great pleasure to invite Professor Karamjit Sandhu for vote of thanks. He is Associate Professor in BPRC College, Kurukshetra, and to
today's webinar is under Paramash scheme of UGC and in collaboration with BPRC Kurukshetra. So I invite Professor Karamjit Sandhu to say a few words. Myself, Karamjit Sandhu. सर आई थिंक वहाँ दो लोग बैठे हुए हैं और मोबाइल जो है उसकी वजह से डिस्टरबेंस आ रही है, तो आप एक को म्यूट कर दीजिए. I express my heartfelt thanks for Dr. Rahul Taneja, scientist, Patent Information Center at State Council for Science, Innovation and Technology, Government of Haryana. He shared very valuable information with us. Particularly, we were surprised to know that the contribution of India in patents is very less. He told it is about 52,000 patents from India as compared to about 10 lakh from China and US. So this contribution from India should be increased, and these kind of webinars would definitely help us to enlighten to get more patents from India. In particular, I noted that the contribution of Haryana is also very less as compared to other states. We also learned that the algorithms can be patented, the business methods cannot be patented, and particularly we should always look for the names of the molecules in medicines than the brand values, the brand names. So thank you very much. It was very enlightening. I would also like to thank Dr. Tina Angra, Principal, M.D.S.D Girls College, Ambala City, for having created this platform for this webinar and collaborating with us. I would also like to thank Dr. Yogeshwar Joshi, Principal, Bhagwan Parshuram College, for collaborating with M.D.S.D Girls College and giving us all this platform for discussion. I would like to thank Dr. Anuradha, Coordinator IQAC M.D.S.D Girls College, Dr. Nisha Bansal, Associate Professor and Coordinator, who is also the Organizing Secretary. I also would like to thank the participants who asked questions and helped us to understand this topic better. Dr. Seema Singhal, Dr. Emma Bansal, and all the people who asked questions. Thank you all. Thank you very much. Over to Dr. Nisha Bansal. Thank you so much, sir. I request participants to fill the feedback form shared by Ms. Anchal. I request Principal ma'am if she is there. We are waiting for your deliberations, ma'am. I find it to be very useful, Anuradha, and I hope all the people from our college and from Parshuram College will understand the utility of IPR. I congratulate both of you, you and the Parshuram team, for holding this seminar with a great success. Thanks to the resource person of today too. Thank you so much, ma'am. Your words really motivate us for doing such activities. And it was your bird view to organize such kind of webinars. Thank you so much, ma'am, for your deliberations. So I request participants to kindly fill the feedback form for certification.
इसमें प्रैक्टिकल दिया हुआ नहीं है।